Bismillahirrahmanirrahim. I hope you're doing well. So today we are starting a new topic from the parts of speech, and that is verbs. And among them, the first type is main verbs. Main verbs simply they are name of actions. जो भी actions हैं, घूमना फिरना, walk करना, आना जाना, ये सारे जो actions इनके name को हम कहते हैं main verbs. और main verbs के बुनियादी चार टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम यूज करते हैं टेंसेस में अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंसेस. और जो फोर्थ पार्ट है फॉर्म वो हम सिर्फ प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं. वर्ब के फॉर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे विद इट्स इट्स टाइप्स. तो वर्ब्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, पहले है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, देन रेगुलर, इरेगुलर, देन फाइनाइट, इनफाइनाइट. तो चलें पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव से. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं बाय नेचर जिनका एक ऑब्जेक्ट हो, या फिर किसी भी सेंटेंस के अंदर उनका ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म हो सके. जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स व्हिच रिसीव एन ऑब्जेक्ट ट्राइंग टू इंप्लाई दैट दे कंटेन एन एक्शंस रेसिपिएंट इन द फ्रेज. किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी रेसिपिएंट मौजूद है किसी वर्ब का एक्शन को रिसीव करने के लिए, वी कॉल दोज वर्ड्स एज ट्रांजिटिव. सिंपली जो भी वर्ब्स हों जिनका पैसिफाइज हो सके उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं. और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम कहते हैं दे इंक्लूड दोज दैट एब्सेंस अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर रिसीवर ऑफ एन एक्शन नहीं होता, या फिर जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का वो एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया. जैसे एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल. स्कूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का. आई रीच होटल, आई रीच्ड इट होटल. अब यहाँ पे भी होटल इज नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि जो एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म कर सके. ठीक है, आई गो टू द स्कूल, आई वॉज गोन बाय स्कूल, इट्स नॉट पॉसिबल. या फिर आई वॉज रीच्ड बाय द रेस्टोरेंट, ये भी पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर intransitive. अब चलते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पे. रेगुलर वर्ब्स आर दोज जिनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास रूल हो. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म बनाने के लिए वी हैव ईडी ऑप्शन. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक, लाइक्ड, लव, लव्ड, वॉक, वॉक्ड. थर्ड फॉर्म भी है वॉक्ड, देन वॉकिंग. तो रेगुलर वर्ब्स फॉलो सर्टेन रूल्स, जैसे ईडी फॉर्म वाला है इस तरीके से. ओके, और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, रेगुलर वर्ब इज अ वर्ड दैट फुलफिल्स customary pattern for constructing its simple past tense and past tense. Okay, or irregular verbs. Irregular verbs include verbs which do not follow the typical tense या parts participle structure. बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वी डू नॉट हैव सर्टेन रूल्स, हमें वो याद करने पड़ते हैं. जैसे रीड, रेड, रीड, पुट. और बहुत सारे हैं जैसे विन, वन, वन, इस तरीके से. तो they do not follow certain patterns or certain rules, that is why they are irregular. So with the practice and reading we come to know वो कौन से verbs हैं. Okay, and then we have finite verbs. The primary verb in a phrase or sentence is a finite verb, the origin of a word that what people's remainder of the phrase. इसी के साथ infinite verb. An infinite verb is something that does not vary depending on the topic to which it has been assigned to. Finite verbs वो हैं जो they means they are not represented by their very root word. वो किसी भी फॉर्मेशन में हो सकते हैं, or they can be like in first form, second form, or in some other version. और infinite verb we always represent them with word to. जैसे root word जब भी हमें show करना होता है तो we use to walk, to read. तो finite verb can be possible, it's reading, read, जिस भी तरीके से आप यूज करें. सो ये सिंपल है, ये these are not like very tough or they're very simple ones, लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए. Now function man verbs.
main verbs are the most common type of the verb in English vocabulary despite lexical items. Lexical item हम कहते हैं word formation को. They have the real verbs and they may be employed independently in a phrase. In the phrase, we call it a sentence. Therefore, in connection, it is crucial to note that in inquiries and expressions, main verbs frequently demand a lexical item. Examples हैं transitive verbs and intransitive verbs is main verbs. Like Arohi eats bananas, Rahul loves dog. This this plant gets very little water. Rajeshri reads novel every day. I drink tea every morning. Intransitive है bird is chirping, a lion is howl, date snores, I'm hungry, Ryle is singing. तो इनका difference आपको पता है and you know its correct use. Okay. Common mistakes while using main verbs. If there are inconsistencies inside the usage of in main verb tenses, it affects context and understanding. अब देखते हैं वो क्या है. The mistake might be a tense misrepresentation, an improper adjustment of the future tense forms, or perhaps an inappropriate tense transfer in a group of words. Main verb tenses could also be uneven across a paragraph. A typical language error occurs when a text begins in present tense, then eventually transitions to the past tense for no obvious case. अब देखें ये समझाने की कोशिश करा है कि जो मेन वर्ब्स हैं उनमें जो एरर करेक्शंस हैं वो होती हैं टेंस फॉर्मेशन में. जैसे एक सिंपलीफाई मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस हमेशा यूज होता है जनरलाइज चीज़ों के लिए, यहाँ पर हैबिचुअल एक्शंस के लिए. और whenever we begin a story, अगर वो experiences related है तो we must start it with the perfect tenses. Either the tone of the story will be conveyed in past simple. तो फिर ट्रांजिशन होती है पास्ट सिंपल से to the perfect tenses, then past simple. तो इस तरीके से tenses and verb tense work together collectively in a certain situation. तो ये राइटिंग के अंदर ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं कॉन्टेक्स्ट के, कॉम्प्रिहेंशन के, कोहेरेंस के, with the practice you will know. तो with the example and structures वो सारी बातें आपको करेक्टली समझ में आ जाएंगी. ओके, अब यहाँ पे सेंटेंसेस हैं. That book is belonging to me. That book belongs to me. Everyone are hardworking. Everyone is hardworking. Rohan looks sadly. No, Rohan looks sad. They have built the house since April last. They have been building the house since April last, or since last April. The lemon are tested sore. The lemon tastes sore. Okay. So it was example and means these were the justification of types of verbs, main verbs in all these. Okay. Examples of the main verbs. She plays hockey in school. We are going to Agra. He could eat all day. The kite was flying high. So सारे bold words are the main verbs. चलें आगे. Identify the main verbs in the following. He has been working all day. Working is a main verb. I play cricket. I'm watching. This is a main verb. My mother is cooking. Cooking is a main verb. Rishan played guitar. Here is a main verb. You really deserve this. Deserve is a main verb. He finished all. This is main verb. Would you prefer iced tea? Would you prefer? Prefer is a main verb. I missed the comfort of my home. They stopped us to move ahead. Okay. So these all words were main verbs. Ab dekhen, these are the answers. Okay. So if you have any question regarding main verbs, you may ask. इसके 4 types हैं और these are very simple one. ठीक है. अब इसमें एक variation है जो 4th form of verb है वो as a noun भी use होता है. जैसे एक example है कि I love to read या I'm reading at the moment. अब reading यहाँ पे main verb है, but if I use it as a noun, reading is a good habit. अब reading as a noun function कर रहा है यहाँ पे sentence में, so we call those noun as gerund. Okay. जैसे what is a gerund definition and examples. Understanding the difference between a gerund and other parts of speech is an important step affecting your grammar and writing skills. A gerund is a verb form used in the third person, meaning it's used as a noun. Simple same definition है इसकी. ठीक है. gerund है क्या? मैंने बताया आपको ing form में जो भी nouns होते हैं we call it gerund.
Okay, how gerund verb Ramya is combining ends here. I will be meeting. Look at the following sentences to see which is gerund and which is not. Ramya is coming ends here. Ace has not been working. It's not. I will be meeting. No, we were watching. कोई भी नहीं है इसमें. Here it is. Exercising daily will help you stay fit and healthy. This is gerund. Following a diet will help you reduce weight and maintain your BMI. Body mass index. Okay, wow, she's great at singing. Great at singing. Okay, this is again gerund. Ask when we use it right now. When we are talking about certain skill or proficiency. Okay, okay. इसके भी different types हैं, लेकिन it is not necessary कि you need to identify with different means types. Simply inform के अंदर जो भी verb form use हो रहा है और in the sentence उसका function है doer of an action or receiver of an action. बस खत्म हो गया. Okay. So ये था आपका main verb and उसके types. और इसके अलावा जो verbs हैं उसके अलावा होते हैं auxiliary verbs जिन्हें हम helping verb भी कहते हैं जो different tenses में use होते हैं. So I hope you understood the use of man verb, types of man verb, और जो इसमें minus differences हैं वो भी you have understood it.